हेलो अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार दोस्तों, बहुत ही ज्यादा वेलकम है एक मरतबा फिर से आप सभी को इस चैनल पे और इस 2K शोकेस की नई एपिसोड में। सो दोस्तों, लास्ट पार्ट में आपने देखा रेसलमेनिया मोमेंट आ चुका है और डैनियल ब्रायन और ट्रिपल एच के दरमियान मैच हुआ जो कि जीता बड़े ही जबरदस्त तरीके से। डैनियल ब्रायन ने अथॉरिटी को एक तरह से हरा दिया है और नेक्स्ट मैच उसका उसी रात ट्रिपल थ्रेट होना है WWE चैंपियनशिप को लेकर, जिसमें बैटिस्टा, रैंडी ऑर्टन और खुद डैनियल ब्रायन शामिल है। सो दोस्तों, इसी पार्ट को आज शुरू करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी वीडियो रोक के चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन पर क्लिक कर देना ताकि जैसे ही नई वीडियो अपलोड हो वो सबसे पहले आप लोगों को मिल जाए। सो दोस्तों, बगैर कोई भी वक्त जाए किए शुरू करते हैं द रिटर्न ऑफ डैनियल ब्रायन 2K19 शोकेस। Bryan lands on his feet, out of the corner, running knee, can Daniel Bryan do it? Can he do it? Yes, 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 yes! I've never had any concerns or doubts about wrestling more than once. One of the biggest upsets in WrestleMania history! Daniel Bryan has stunned the world! Oh, Triple H from behind! So after the first match, I was backstage and I just spent most of the time trying to get my body warmed up to go out there again. There's no way that he can be 100% for this match. The kid's got guts. If there's three things that I have that you would say, what are your best attributes? Legs, lungs, heart. And I never get tired. सो दोस्तों, मैच जो है वो ऑफिशियली स्टार्ट हो चुका है और डैमेज रैंडी ऑर्टन इन द रिंग पहला टास्क मिल गया है। तो भैया सबसे पहले जो है बैटिस्टा को रिंग से बाहर फेंकना पड़ेगा या कहीं साइड पे लगाना पड़ेगा, तभी जो है सही से डैमेज कर सकेंगे रैंडी ऑर्टन को हम लोग। Daniel Bryan. Everyone enters with determination to succeed in the main event of जबरदस्त नी पड़ी और भैया काफी ज्यादा डैमेज जो है वो ले गई है रैंडी ऑर्टन की। एक और फ्लाइंग किक और यहाँ पे दोस्तों पहला टारगेट भी कंप्लीट हो चुका है। डैमेज बैटिस्टा एट रिंग साइड। ओके, तो ये भी दोस्तों जल्दी से कंप्लीट कर लेते हैं। अबे रैंडी साइड पे हो जा भाई। If Orton and Batista can work together, जबरदस्त। Bryan won't be a factor. Toss to the outside. Well executed drop kick. दोस्तों, रैंडी ऑर्टन को लगता है लगानी पड़ेगी, उसके बाद ही जो है, बल्कि वो खुद ही साइड पे हो गया। जबरदस्त, एक और किक पड़ जाए तो काम खत्म है यहाँ पे भाई यार। ये चीज दोस्तों रिवर्स बैक और जबरदस्त लगाया और टारगेट भी यहाँ पे दोस्तों कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट स्टेप परफॉर्म टॉप रोप कॉर्नर ग्रैपल। ओके, सो रैंडी ऑर्टन पे दोस्तों टॉप रोप ग्रैपल करना है। अब बैटिस्टा को किसी तरह रिंग से बाहर ही रखना है दोस्तों, ताकि रैंडी ऑर्टन पे अच्छे तरीके से अटैक वगैरह कर लिया जाए। He handily won the Royal Rumble and has been dominant ever since. Batista did impress at the Royal चल भाई Rumble. अंदर आ जा। The Authority didn't even let Daniel Bryan enter the match. जबरदस्त दोस्तों, रिंग से बाहर फेंक दिया बैटिस्टा को और यार ये काम खराब हो गया। जल्दी से मैच में दोस्तों वापसी करनी होगी। जबरदस्त। The flying forearm finds his target. Cole, you whined about Bryan missing the Royal Rumble. Did you forget that he lost to Bray Wyatt earlier that night? Why should a loser get a shot in the Royal Rumble? I'll ignore the fact that Bryan had to fend off Harper and Rowan during that match. अबे यार, नहीं रिवर्स बैक कर दिया उसने दोस्तों, पीछे हटना पड़ेगा। ये चीज जबरदस्त। Fan favorite liked it. Schoolboy out of nowhere. बैटिस्टा को दोस्तों फिर से निकालना पड़ेगा रिंग से बाहर, क्योंकि ये जो है काफी ज्यादा काम खराब कर रहा है। चल भाई, तू तो जाना रिंग से बाहर पहले। यार 2 मिनट सफर तो कर ले भाई। This kid is nuts. Yeah, but Michael, Daniel Bryan has got the power of the yes movement behind him. That might be just enough for Bryan to power through the pain. जबरदस्त दोस्तों, बैटिस्टा को जो है वो निकालना है रिंग से बाहर दोबारा से एक मर्तबा।
अबे क्या कर रहा है भाई, रिंग से बाहर फेंक। जबरदस्त दोस्तों, रिंग से बाहर चला गया बटिस्टा। अब रैंडी ऑर्टन जो है उसको टॉप रोप पे करना है। जबरदस्त दोस्तों, रिवर्स बैक कर दिया यहाँ पे डैनी बॉय ने। और अबे यार बटिस्टा फिर से आने लगा रिंग में दोस्तों, पर उससे पहले ही लगता है काम अपना हो जाने। जबरदस्त दोस्तों, सक्सेसफुली कंप्लीट बटिस्टा के आने से पहले ही। और अब जो है दोस्तों फ्लाइंग गॉड लगाना है रैंडी ऑर्टन पे। Talent that they haven't handpicked to get some opportunities. I want to pick back up the discussion of the authority. He's got the shoulders down. This one's far from over. इतना आसान नहीं है डैनियल ब्रायन को दोस्तों। नेगेटिव मोमेंटम में गए, सबसे पहले इसको पॉजिटिव में लेकर आते हैं। अबे दोनों रैंडी ऑर्टन और बटिस्टा जो है वो इस टाइम डैनियल ब्रायन के पीछे पड़े हुए हैं। I have to wonder if he's still got the killer instinct of the Apex Predator. He's been hiding behind the authority an awful lot lately. Oh, please, Byron. We're seeing the rebirth of Randy Orton. जबरदस्त। Last year he won the बटिस्टा को WWE किसी तरह Championship दोस्तों at रिंग से बाहर SummerSlam, फेंकते हैं successfully defended ताकि his रास्ता title थोड़ा against सा guys साफ like हो Daniel जाए। Bryan and the Big Show, and then closed out the year by unifying the WWE Championship and World Heavyweight Championships by beating John Cena in a ladder match. Nobody else in the WWE right now is on a roll of that magnitude. सिग्नेचर मूव दोस्तों करनी पड़ेगी अपने पास। ओ वाह भाई, Reversal there by Randy Orton. Can he score the pin? Looking to catch him off guard there, I guess. Clearly not enough damage done. He delivers a hard clothesline. Batista might get an early 3 count. I cannot believe the WWE Universe's reaction to Batista. This guy takes time out of his busy movie star schedule to return to WWE, and they've given him nothing but disrespect. All due respect to the animal, but it's the WWE Universe's signature move हासिल करनी है दोस्तों। And boo who they boo. They see Batista as a part-timer who's stealing the spot from a regular performer like Daniel Bryan. Discussing the WWE Universe's reaction to Batista's return, you two recall their hatred of the returning star. I don't think the animal really cares what they think. Well, they don't deserve him. He's told them time and time again to deal with it, and they'll have to when he wins here in the main event of WrestleMania. अबे चेयर लेकिन अबे निकलो भाई दोस्तों, अभी पड़ जाती चेयर काम खराब हो जाना था। पहले ही हालत टाइट है भाई डैनियल की, बहुत ही ध्यान के साथ खेलना पड़ेगा। आजा भाई रिंग के अंदर। ओए क्या कर रहे हैं यार? It's not even close, Cole. All Bryan's done at WrestleMania before खराब कर रही है in 18 seconds 2 years ago, then rely on Kane to get the job done last year. Orton and Batista जबरदस्त दोस्तों रिवर्स बैक, और इसी के साथ सिग्नेचर मूव भी मिल गया है। और बटिस्टा को सबसे पहले बाहर निकालना है रिंग से। जबरदस्त। And it's moves like that that make him so dangerous. Michael Corey, the two of you mentioned Bryan's lacking resume compared to Batista and Orton. Oh भाई क्या बात है। Batista beat Triple H in the main event of WrestleMania 21 and had championship matches at WrestleMania 23 and 26. And the Apex Predator is in his 11th consecutive WrestleMania. Orton was in the main event of the 25th anniversary of WrestleMania and successfully defended the WWE Championship against John Cena and Triple H the year before that. Bryan is extremely outclassed tonight. वे लॉक बाद में लगाएं भाई, पहले निकाल इसे रिंग से बाहर। दोस्तों फिर से जो है सिग्नेचर मूव गेन करना पड़ेगा। भैया काम खराब ही हो गया यहाँ पे। Looking for the finish. Lands this and he is done. Oh man, right to the arm. Hyperextend your elbow. इसका तो दोस्तों आज लगता है इस मैच के अंदर बाहर गिरने के लिए है। जिस तरह ही अंदर आता है डैनियल उसे पकड़ के बाहर कर देता है। चल बाहर कर भाई, तो अपनी मूवीज ही किया कर जाके मार्वल वालों के साथ। यहाँ पर सिर्फ डैनियल ब्रायन जो है आज अपना हुक्म चलाएगा। What incredible power. Wow, what a
दोस्तों करीब ही है, बस सिग्नेचर मूव के थोड़ी सी किक्स और लग जाएं तो सिग्नेचर मूव हम लोगों को मिल जाएगा। जबरदस्त, चल भाई जल्दी कर। और दोस्तों मिल गया यहाँ पे सिग्नेचर मूव। अबे भाई टाइम क्यों ज़ाया कर रहा है यार। जबरदस्त, आजा रिंग। अबे गिरा, रिवर्स बैक दोस्तों करना होगा। जबरदस्त, जंप लगा देते हैं पहले बिटिस्टा के ऊपर और दोस्तों अब जाते हैं रैंडी की तरफ। I don't like the look in his eye here, folks. मिल गया दोस्तों सिग्नेचर मूव और यहाँ पे जो है फ्लाइंग गोट लगा दिया और कंप्लीट कर लिया अपने टारगेट को भी। अब यस लॉक लगाना है रैंडी ऑर्टन पे इन द रिंग, तो उसके लिए भैया बटिस्टा को बाहर लाना पड़ेगा ताकि बड़े ही आराम के साथ ये यस लॉक लगा लिया जाए। Taking on any more damage here could Oh, very well भाई, mean reverse the back किया। beginning of the end. Knocked off his feet. Now that's a takedown. Takes him down in a major way too. Drops the elbow on him. At this point, you think he'd have that move well scouted. He's lining him up. आज फिनिशर के लिए तैयार। ओ भाई रिवर्स बैक कर दिया रैंडी। दोस्तों यहाँ पे यस लॉक लग भी जाना था पर कोई नहीं, अभी हमारे पास फिनिशर 2 और हैं, दोबारा ट्राई कर लेते हैं। पर उसके लिए क्या कर रहा है भाई, सीधा खेल। रैंडी ने बड़ी चल भाई डैनियल ब्रायन जल्दी उठ जा दोस्तों, काम ना खराब कर दे कोई बस। ये जबरदस्त बटिस्टा पे दोस्तों सबसे पहले अटैक करेंगे, बल्कि वो खुद ही रास्ते से फारिग हो गया, इसको सिर्फ रिंग से बाहर निकालना है। चल भाई पे कॉर्नर में जाने को नहीं कहा था पर कोई नहीं, चलो अब आ जा। ओ क्या कर रहा है जबरदस्त दोस्तों। अब लगाते हैं यस लॉक फिर से एक मरतबा रैंडी ऑर्टन को। He's in trouble. भाई अब ना रिवर्स बैक करी। जबरदस्त दोस्तों लगा दिया यहाँ पे यस लॉक और कट सीन भी इसी के साथ शुरू हो गया। तो ओ भैया ट्रिपल एच और अथॉरिटी वापस आ गए हैं। Championship right there. Clearly Triple H is still bitter over losing to Daniel Bryan earlier on tonight. Yeah, the reason Daniel Bryan has made it to this matchup. Meanwhile, is Daniel Bryan Batista with a spine buster. Triple H now summoning a new official. What the? Come on. I'm sure this referee's going to be fair. It's all about what's best for business, gentlemen. It's all about screwing over Daniel Bryan. Looking to put Bryan away with the Batista bomb. Here's the cover. And a kick out. A kick out. Not quite. The Authority obviously unhappy with the performance of this official. It's just continued oppression by the Authority. Trying to control the narrative, control the match. Who signs your paycheck, Saxton? Yeah, but the bottom line is this. Daniel Bryan has had his back against the wall since the beginning of this night. He's been banged up, he's bruised, he's battered. Now he's got the Authority against him once again. Meanwhile, Batista to the post. And Daniel Bryan
Bryan trying his best to fight this uphill battle. Bryan's fired up. Look out! Bryan! Suicide dive down on the authority. Right now, it's Daniel Bryan against the world. Do whatever you gotta do to survive. Daniel Bryan battling, fighting everybody. बहुत ही जबरदस्त सीन दोस्तों, ये कमाल का सीन है यार। फिट इसके बाद भी दोस्तों बहुत हैवी हुआ था काम। चलो भैया, बटिस्टा को कवर करना है पिन के लिए। Rolling up Batista, shoulders are down, and just breaking things up is Randy Orton. How close was Daniel Bryan? As close as Daniel Bryan's ever gonna get, because now the plan is coming together, and Bryan's gonna end up on the short end of the stick. And now the assault outside the ring by Randy Orton. Remember, triple threat rules, no countouts, no disqualifications. Anything goes as Bryan is whipped into the barricade. And Randy Orton now unleashing fury on Bryan. Randy Orton seemingly in desperation mode, along with Batista doing whatever they can to suppress Daniel Bryan. This is clearly about injuring Bryan, ending his career, and now Randy Orton with steel stairs in hand. Yeah, this very well could end Bryan. Oh my God, Bryan driven down again. Daniel Bryan's fairy tale evening just came to a screeching halt. Look at this, Batista and Randy Orton game planning their next form of attack. This is absolutely disgusting. Oh boy. Now right here in front of us, the announce table being ripped apart, and you can only imagine what Batista and Orton have planned here. Perhaps the final act to disable the dreams of Daniel Bryan. Bryan can't even move. He's defenseless out here. Bryan is giving it his all. So much heart, so much determination. Oh my God, to the announce table now. Bryan went through hell in the first match tonight, and now a second match against Orton and Batista. You don't think? What the? Oh, I do think. Batista wants to end Bryan's career right here. Oh no. Up goes Bryan. ओ भाई, क्या कंबाइंड पावर बॉम्ब और आरकेओ लगा है दोस्तों। My goodness. Are you kidding me? Bryan's been broken in half. Be careful what you ask for, Daniel Bryan, because you just might get it. Absolute no concern for the health and well-being of Daniel Bryan. And now the medical personnel bringing in a stretcher. What a horrible sight. Oh, what a horrible way for this night to end for Daniel Bryan, who fought so valiantly earlier on to beat Triple H, to get to this triple threat match for an opportunity at the championship, the main event at WrestleMania. And now Batista just flattened Orton. Yeah, Batista and Orton, who had an alliance moments ago, now turn this into a one-on-one match for the WWE title. That's what they wanted. That's what Batista and Randy Orton wanted. They wanted Daniel Bryan out of the equation so they could compete for the championship. Well, it's also what the Authority wanted as well. Triple H and Stephanie. They wanted Daniel Bryan out of here. Been a thorn in their side forever. Batista once again in complete control. The Apex Predator is being beaten down. Meanwhile, medical personnel continue to work on Daniel Bryan as this match continues for the WWE Championship. All right, now it's Batista who's in firm control again over the Viper. Well, the Animal returned to WWE for one reason, to be the best. And look at Orton fighting back, but again, driven back down to the floor. Now the Animal could be just moments away, Corey, from accomplishing that goal. And Orton rolled back into the ring by the Animal, Batista. But Orton caught him. And now Randy Orton's got Batista where he wants him. Batista took too much time.
And he may pay for it. Went for the DDT, and Batista launches Orton over the top rope. Meanwhile, Daniel Bryan's being stretchered back to the locker room area for medical treatment. No. Randy Orton off the apron, face first goes Batista. And there's Bryan being carted away. Better bring that stretcher back here. We might need it for Batista. Terrible, terrible way for this night to end for Daniel Bryan. Daniel Bryan, what is he doing? Listen, I get the fighting spirit of Daniel Bryan, but Bryan's hurt. What is Daniel Bryan doing? Bryan's got more guts than brains, period. Medical personnel try to get Daniel Bryan out of here, and now Orton has Bryan. Well, Randy Orton's going to make sure that Daniel Bryan heads back to the locker room on a stretcher after driving him into the steps. सो कट सीन दोस्तों खत्म हो चुका है और परफॉर्म करना है यस लोग बेटिस्टा पे और टैप आउट करके ख़त्म करना है इस मैच को। तो भैया अभी जो है आराम से दोस्तों साइड पे रहते हैं, रिंग में जाते हैं। सबसे पहले तो पॉजिटिव मोमेंटम गेन करते हैं। डैनियल ब्रायन की बॉडी पूरी रेड हो चुकी है इस टाइम। दोस्तों लास्ट टास्क है हमारे पास ये बस, और कुछ भी करके जो है इसको ख़त्म करना है। रैंडी आया रिंग के अंदर दोस्तों, इसको तो ओ भाई क्या कर रहे हैं यार। Daniel Bryan's been fighting hard for 8 long months, but his dream looks to be fading and fast. Orton and Batista can finally stop the दोस्तों यहाँ पे अगर इसने पिन कर दिया और चल 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 भाई जल्दी, कमॉन भाई डैनियल कर सकता है तू। बहुत जबरदस्त दोस्तों, निकाल लिया इस लॉन्ग में से भाई। यहाँ पे काम खराब हो रहा है। आ जा दोस्तों, जल्दी से लगाना है इस पे। आते हैं ऐसे बटिस्टा को और फिनिशर लगा के काम खत्म करते हैं। चार्ज फिनिशर सही है, बस ये रिवर्स बैक ना करे। उस जबरदस्त दोस्तों लगा लिया यस लॉक हम लोगों ने। यहाँ पे सिर्फ टैप आउट करना है इधर। कमाल है भाई, सक्सेसफुली कंप्लीट दोस्तों। और मैच जो है जीत लिया है यहाँ पे डैनियल ब्रायन ने, और बन चुका है यहाँ पे नया WWE चैंपियन। अपना हमारा भाई डैनी बॉय जीत गया है। और जबरदस्त मोमेंट, कमाल का यार जबरदस्त। Daniel Bryan just overcame the authority. Daniel Bryan just had the greatest performance in 30 years of WrestleMania. In one night, he defeated Triple H, Batista, and Randy Orton, and is now WWE World Heavyweight Champion. Michael, this is just a matter of one competitor being that much better than the other two on this given night. We may be in New Orleans tonight, but I assure you there was nothing easy about that win right there. जबरदस्त नाइट यार, जबरदस्त किस्म का मैच। द रिटर्न ऑफ डैनियल ब्रायन भाई बड़ा ही जबरदस्त शोकेस निकाला है। सो दोस्तों यहीं पे एपिसोड खत्म होती है। कुछ कंटेंट्स अनलॉक हुए हैं जिसमें रैंडी ऑर्टन, बैटिस्टा, रेसलमेनिया, ट्रिपल एच कंटेंट्स हमारे पास अनलॉक हो चुके हैं। तो दोस्तों यहीं पे जो है इस पार्ट को खत्म करते हैं। वीडियो अगर पसंद आई है तो यार ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ कि किस तरह की लग रही है गेम आप लोगों को। चैनल पे नए हो तो यार जाते जाते चैनल को जो सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन पे क्लिक कर देना, ताकि जैसे ही नई वीडियो अपलोड होगा सबसे पहले आप लोगों को मिल जाए। तो दोस्तों मैं मिलूंगा आप लोगों से इसी अमेजिंग शोकेस के नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए चीयर्स, मिलते हैं।